बांधनी एक इंडिया का 400 साल पुराना क्राफ्ट है जो ज़्यादातर राजस्थान गुजरात में होता है। गुजरात में स्पेशली कच्छ की बांधनी सबसे फाइनेस्ट बांधनी मानी जाती है और बांधनी की स्पेशलिटी ये है कि जितना महीन उसका दाना होता है उतने ही वो अच्छे से अच्छी बांधनी कहलाई जाती है। I'm here in Bhuj in Kutch working with Kasbi. They do Bandhani resist dyeing, and also with Basma Hamdi and her team from Type Araby in Doha, Qatar. Now, the beautiful thing about this community is that most of them are Muslim. A lot of them, for example, read the Quran and have an understanding of Arabic letter forms. And so it has been very exciting and rewarding watching them ask questions about the different letters or even know how to read the letters and the words that we're giving them to explore. मैं 5th जनरेशन हूँ जो ये बानी का काम कर रहा हूँ। बानी की काम की नॉलेज हम जब छोटे थे तब से हम अपने पेरेंट्स को बांधनी करते हुए देखते आ रहे हैं और जब भी स्कूल में छुट्टियां होती थी तो हम अब मेरे फादर को और मेरी मदर को इस काम में हेल्प करते थे। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो उतना ज़्यादा हमको क्राफ्ट का नॉलेज आता गया। I'm really excited about this project because we're getting to explore a very traditional craft designed traditionally by a family here of brothers who focus on the design, and then they have a group of craftswomen that actually execute the tying. So Bandhani is a form of tie-dye. And this time we're introducing a new script, which we're really excited about. We're introducing Arabic combined with the Bandhani craft. We started with them just working on abstract shapes in terms of, so we gave them tools to mimic the tie-dye and like a stamping tool, and then basically they were asked to just make a line or a curve or a diagonal in the first day, so they did a lot of explorations. And then yesterday we spent the whole day just working on letters. So the stamps have different diameters, so they are different sizes, so they represent different size of dots that you have in Bandhani. So we asked them to experiment with one was we left it free, and then we asked them to experiment with contrast. So you have small dots becoming big dots, like a gradient. बांधनी हम लोग ने पहले कॉलेज में भी पढ़ा है, लेकिन जब यहाँ पे आने के बाद पता चला कि ये बहुत अलग है। जितना पढ़ते हैं उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में। दोनों को ये प्रैक्टिकली जब अप्लाई करते हैं ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और ये बहुत इसमें लेबर सब लगता है, बहुत कुछ है इसमें। ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। जितना हम देख के लगता है उतना ईजी नहीं है ये। इसमें बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, फुल फैमिली इन्वॉल्वमेंट आता है इसमें। एक के बस की बात नहीं है कि एक ही पर्सन पूरा सब कुछ एक साथ कर सके। इसमें पहले किसी को डिज़ाइन बनाना है, फिर उसको प्रिंट करना है, फिर उसको बांधना है, फिर उसको डाई करना है और फिर वो फाइनल प्रोडक्ट रेडी होगा। इसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है। बांधनी एक बहुत पुराना क्राफ्ट है और बांधनी में भी बहुत अलग अलग डिज़ाइंस टेक्निक्स वगैरह भी यूज़ होती हैं और ये मोस्टली बंधेज का काम है वो लेडीज़ करती है और जो डाइंग का और प्रिंटिंग का प्रोसेस है वो मोस्टली मेल्स से किया जाता है। I think the most challenging thing so far is how do we allow the craftswomen and the designers to actually have a voice in the process. It needs to come from them. It shouldn't be a top-down process where we are telling them what to do or dictating what they should do, but we should allow them to explore this very new idea, this very new project
with agency so that they have a say in how these patterns that they're so used to tying and creating mechanically, how they can be used in a different way. Perfect क्या होता है? मतलब एक लाइन है जिसको हम बांधनी करेंगे, मतलब देखो अगर 2-3 कलर्स भी हम लोग अगर टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, टाइम यूज कर रहे अगर हम लोग, ये इसलिए अच्छा लगा कि बांधनी की डिजाइन है, हम इस तरह से बांध सकते हैं बांधनी में डिजाइन में। बांध सकते हैं गले में बांध के Look nice on the neck. मैं शायद 9th में या 8th स्टैंडर्ड में थी, तब से मैं बांधती हूँ ये बांधनी। अब तो हम वर्कशॉप है, उसमें हम सीख रहे हैं कि कैसे डिज़ाइंस बनाएं। पहले सिर्फ हमको वो ही आता था कि कैसे बांधते हैं, अब तो डिज़ाइंस भी आती है हमें बनाने के लिए। स्टार्टिंग में ऐसा हुआ कि टफ़ लग रहा है, पर स्लोली हमने सीख ली थोड़ी थोड़ी। I think the most challenging thing we found was the kind of like the challenge of merging design, or kind of the communication between design and craft, because our minds, being like we designers, we are taught a certain way of how a visual should work, how visual communication works, but then when you come and meet craftsmen, their idea of their craft and their visual communication is much more different. So finding a common language was a bit challenging. Both sides are learning from each other, because we're bringing in Arabic typography, and they're teaching us the art of dyeing and how they put together the patterns. And so it's I think there's definitely like a learning curve, but I think in a very good way, in a very interesting way. लेकिन हम वर्कशॉप में आए तब से हमें पता चला कि डिज़ाइंस भी हम कर सकते हैं, बांध भी सकते हैं, डाइंग भी हम कर सकते हैं, फीमेल्स, ऐसे नहीं है सिर्फ मेल्स ही कर सकते हैं। सो हमको ये भी सीखने मिला। ये वर्कशॉप जो हम कर रहे हैं ये हमारे लिए बहुत ही नया था, और जो हम लोग ने अरेबिक लेटर्स सीखे, हम लोग अरबी तो पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ये जो लिख के और उसमें डिज़ाइन यूज़ करना और अलग अलग इम्प्लीमेंट करना डिज़ाइन, वो बहुत ही हमारे लिए डिफ़िकल्ट भी था, चैलेंजिंग भी था, लेकिन बहुत अच्छा वर्कशॉप था। ईशान सर और बसमा मैम बहुत सपोर्टिव थे इसमें हम लोग के लिए, और हम लोग ने बहुत मतलब धीरे धीरे करके हमें बहुत कुछ सीखने मिला है इससे। The most unique aspect of the whole workshop was, as my colleague said, the interaction with the artisans and sort of learning from them, but at the same time making sure that whatever the outcome of this workshop is, we make sure that the craft is preserved in the work and it's not changed. We stay true to the technique and the history of it. So the workshop experience was amazing. It was wonderful to work with the craftswomen and with Fahad and Talha, and to learn more about the craft of Bandhani. I think it was amazing to see how we could transfer the forms of Bandhani into letter forms. Arabic is a naturally cursive and curved script, and so it lends itself really well to the circular forms of Bandhani. The main challenge was to communicate our vision without imposing a kind of direction or to dictate how the work should look in the end. So it was really important for us to make sure that we maintained authenticity of the craft, to make sure that this was true Bandhani. It wasn't just us coming and saying we want to make these letter forms and impose a vision that we had, but really to have this come from the true craft of Bandhani, come from the artisan's vision as well. इन्होंने जो हमको अरबिक लेटर्स दिए, और अरबिक लेटर्स में ऐसी बानी हमने ट्राई की है कि एक अलग ही कॉन्सेप्ट, एक अलग ही डॉट्स का कंट्रास्ट जो हमने मेंटेन किया है उसमें। और सबसे ज़्यादा हमारे जो आर्टिज़न हैं जो बांधनी बांधते हैं, उन्होंने भी इतनी मेहनत से
अपने हाथों से इन लेटर्स को डिज़ाइन किया, वो भी इन्वॉल्व हुए डिज़ाइनिंग में, उन्होंने ही बांधा और उन्होंने ही यही चीज़ें अपने आप खोल के देखी, तो उनको भी ऐसा लगा कि नहीं, हमें आज कुछ बहुत ही मज़ेदार कुछ सीखने मिला है, क्योंकि ये एक अलग ही तरह का ब्रेकडाउन था कि मतलब हम लोग एक दूसरी ही लैंग्वेज को कैसे अपनी क्राफ्ट में अलग तरीके से उसको बना सकते हैं। ये एक बहुत ही हमारे लिए एक नई चीज़ थी एंड बहुत ही हमें मज़ा आया ये काम करने में। And the goal since the beginning has been to bring designers and tribal artists, craftspeople together. So we make fonts which are functional digital fonts on the computer with these crafts and tribal art forms. It's very important for us, but also for the community, we hope, because it allows them to experiment and work on design thinking and other sorts of forms which they are not used to doing. And in many cases, as we see with Bandhani and we have experienced previously also, the women are not always involved in the design process. So I think working on collaborations, like the collaboration between Typecraft and Type Araby, is important because it helps students, helps researchers, helps the general public understand the importance of the hand in typography. So I think the collaboration between me and Ishan is really amazing because it brings together both of our expertise, and it's a really nice merge of the two worlds that we come from.